Non-verbal message, although what you say is most important, the non-verbal messages you send can also have a powerful effect on how well your audience receive your message. How you look, how you move, and how you speak can make or break your presentation. इसको भी objective में underline कर लें कि आप जिस तरह से आप चलते हैं, हरकत करते हैं, बोलते हैं या प्रेजेंटेशन को आप ब्रेक करते हैं, इट्स ऑल and these all things are noted by the audience. Look terrific, like it or not, you will be judged by your parents for everything but small in-house presentation. ये इसमें भी जिस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंटेशन में नोट की जाती हैं. ठीक है, अगर आप आपके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो टेरिफिक है, यानी आप डरे डरे सहमे सहमे लग रही हैं, तो डेफिनेटली इट इफेक्ट्स यू. ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करती है. Engaging the audience with effective imagery. Just have a break. उसके बाद हम देखते हैं engaging the audience with effective imagery. Sometime हम imagery के जरिए से भी अपनी audience को involve कर सकते हैं. आपकी प्रेजेंटेशन का बेसिक मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से इन्वॉल्व कर पाते हैं. हम इमेजरी के थ्रू यानी मेटाफर, जी हम डिफरेंट जो इफेक्टिव इमेजरी है उसके जरिए से भी हम ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, यानी मेटाफर के जरिए से. कंपैरिजन बिटवीन डिसिमिलर थिंग्स विदाउट द वर्ड्स लाइक और एज के वर्ड्स को यूज करते हुए हम यानी मेटाफर को यूज करते हुए हम ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं. के बाद एनालॉजी है, कंपैरिजन ऑफ सिमिलर ट्रेट्स बिटवीन सिमिलर थिंग्स. अच्छा जी, ये चीजें जो है ना, मेटाफर, एनालॉजी, पर्सनलाइज्ड स्टैटिस्टिक, वर्स्ट और बेस्ट केस सिनेरियो, पर्सनल एनेक्डोट और सिमिली, ये सारे भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. यानी व्हाट इज द सिमिली, व्हाट इज द मेटाफर, कि ये सारी चीजें, ये इमेजरी जो है ये आपके कोर्स में भी शामिल है, कोर्स आउटलाइन में. ठीक है, पर्सनल एनेक्डोट पर्सनल स्टोरी है, यानी पर्सनल स्टोरी के जरिए से भी आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने टॉपिक से उसको रिलेट कर लें पर्सनल स्टोरी को. या सिमिली, कंपैरिजन दैट इंक्लूड द वर्ड लाइक और एज. लाइक और एज के वर्ड को यूज करते हुए भी हम किसी चीज को कंपेयर करके यानी कंपैरिजन करके हम अपने ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, animate your body, be enthusiastic and let your body show it. Stand with good posture to show confidence. Emphasize ideas to enhance points about size, number and direction. Use a variety of gestures but don't plan them in advance. Punctuate your words. You can keep your audience interested by varying your tone, volume, pitch and space. Use pauses before and after important points. Allow the audience to take in your ideas. Get out from behind the podium. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी विजुअल एड्स. ठीक है, यानी जो हमारे लिए जरूरी है, विजुअल एड्स जो देनी जरूरी है. ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स. अब टाइप ऑफ विजुअल एड्स में हमारे पास क्या क्या है? मल्टीमीडिया है, ठीक है, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, यहाँ पे यू कैन सी ऑन द पिक्चर चार्ट्स, ग्राफ्स हैं, फिर पिक्चर्स हैं. ठीक है, डिफरेंट पीपल हैं. उसके बाद यहाँ पे मैप्स हैं, फिल्म्स हैं, पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं, ये सारी जो है विजुअल एड्स हैं, इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं. बेसिकली हमारे पास विजुअल एड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? मल्टीमीडिया स्लाइड्स हैं. ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 इज मल्टीमीडिया स्लाइड. मल्टीमीडिया स्लाइड्स के जरिए से भी हम अपना जो है मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. अब मल्टीमीडिया स्लाइड्स में हम देखते हैं क्या है. Today's excellent software programs such as Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Apache OpenOffice Impress, Corel Presentations and Adobe Presenter.
You can create dynamic, colorful presentation with your desktop, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन. ठीक है, जिस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को कलरफुल बना सकते हैं पावर पॉइंट के जरिए से, एप्पल कीनोट के जरिए से. You can create dynamic colorful presentation with your desktop, laptop, tablet or smartphone. The output from these programs is generally shown on a computer screen, a TV monitor, and LCD. LCD अब यहाँ पे देखें LCD किस चीज की एब्रीविएशन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ठीक है, तो भी ऑब्जेक्टिव में ले जाइए. पैनल और प्रोजेक्शन स्क्रीन. ठीक है, जिस तरह से आप मल्टीमीडिया एक प्रोजेक्शन स्क्रीन के जरिए से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं. With a little expertise and the right equipment, you can create multimedia presentations that include audio, videos, images, animation, and hyperlinks, as described in the next section on multimedia presentation. Digital slides can also be uploaded to a website or broadcast on the web. यानी आप स्लाइड्स को भी, जैसे ये स्लाइड्स हैं, इनको भी आप वेबसाइट पे अपलोड करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छी प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. Then handouts. You can enhance and complement your presentations by distributing pictures, outlines, brochures, articles, charts, summaries. अब ये देखिए, ये handouts में ये सारी चीजें शामिल है. और other supplements. Speakers who use multimedia presentation software often prepare a set of their slides along with notes to hand out to viewers. To avoid distraction and to keep control, we should announce and discuss handouts during the presentation, but delay distributing them until after you finish. यानी आप इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो चीज आप उनको सिखाना चाह रहे हैं अगर उनके हाथ में भी होगी तो डेफिनेटली वो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जूम प्रेजेंटेशन है. जूम प्रेजेंटेशन भी हम दे सकते हैं. जी, then there is Zoom presentations. Many business presenters feel limited by multimedia slides, which tend to be linear. As a result, some communicators prefer more dynamic visual aids. ठीक है, समटाइम हम Zoom presentation के जरिए हम presentation को zoom भी कर सकते हैं. ठीक है, यानी नॉन लीनियर जो 3D क्वालिटी है वो zoom in और zoom out को वो अलाउ करती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं as a result some communicators prefer more dynamic visual aids using software such as Prezi, which is a cloud based presentation. हाँ जी, आप में से बहुत सारे लोग जो है प्रेसी सॉफ्टवेयर को जानते होंगे. जिस तरह से हम स्लाइड शेयर है हमारे पास, इसी तरह prezi.com पे भी आप डिफरेंट स्लाइड्स देख सकते हैं. स्लाइड्स पे आप अपना जो डाटा है वो पुट कर सकते हैं और उसके जरिए से आप स्लाइड prezi.com पे आप देखते हैं एक स्लाइड को अगर आप जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट करने से, जूम आउट आप करते हैं तो वो स्लाइड ज्यादा आउटवर्ड साइड पे जो है वो अपेयर हो जाती है और आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से वो नजर आ जाती है. These 3D presentations allow the speaker to zoom out and in of images to help the audience better understand and remember content, details, and relationships. Zoom presentations allow presenters to communicate their ideas in more exciting and creative way. Okay, Zoom presentation जो है वो हमें एक ज्यादा creative way में हमें जो ideas को हम communicate कर सकते हैं. Audience members also seem to appreciate the cinematic, interactive quality of these presentations. Okay, उसके बाद आप देखें moving beyond PowerPoint bullets. Few business people would do without the razzle-dazzle of colorful images to make their points. Electronic slideshows created using PowerPoint in particular have become a staple of business presentation. However, overuse or misuse may be the downside of the ever-present PowerPoint slideshow. ठीक है, यानी हम moving beyond and PowerPoint bullets के जरिए से भी हम अपनी presentation को show कर सकते हैं. Over more than 2 decades of the software program's existence, millions of poorly created and badly delivered presentations have tarnished PowerPoint's reputation as an effective communication tool. Tools are helpful only when used properly. In the last few years, several communication consultants have tried to show business people how they can move beyond bullet points.
The experts recommend creating slideshows that tell a story and send a powerful message with much less text and more images. Presentation guru Garrett Renaud urges readers to unleash their creativity. Do not rely on Microsoft or Apple or anyone else to dictate your choices. Most of all, do not let mere habit and the habits of others dictate your decisions on how you prepare and design and deliver your presentations. However, before breaking with established rules and expectations, we first need to understand design basics. Okay? सबसे पहले हमें design की basics को समझना जरूरी है. Even much doubted alternatives to PowerPoint, such as Prezi and Slide Rocket, require some knowledge of the sound design principle covered in the next section. यानी ऐसी अगर हम Prezi.com को यूज करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स चाहिए, कुछ हमें ऐसी स्किल्स चाहिए जिसके जरिए से हम अपनी स्लाइड्स को बना सकते हैं और अपनी स्लाइड्स को हम दूसरे लोगों के लिए उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, वेल डिजाइन बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयरिंग एंगेजिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है. Our next topic is preparing engaging multimedia presentation. Okay, multimedia presentation हम दे सकते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू भी. जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप अभी आपके लेक्चर्स भी होते हैं जिस तरह से यूनिवर्सिटी में होते थे, तो ऑनलाइन कुछ टीचर्स जो हैं वो मल्टीमीडिया यूज करते हैं जिसके जरिए से आपके सामने एक बुक तो होती है उसके साथ आपके पास कंप्यूटर ओपन होता है उससे और आप मल्टीमीडिया के जरिए से आप देख सकते हैं. Some presenters prefer to create their visuals first and then develop the narrative around their visuals. Others prepare their content first and then create the visual around their around component. The risk associated with the first approach is that you may be tempted to spend too much time making your visual look good and not enough time preparing your content. Remember that great looking slides never compensate for this content. The following section explain how to adjust your visuals to the situation. And if situation के according, for example, you can see on the screen that this picture is according to the content that preparing engaging multimedia presentation. That this picture also shows the multimedia presentation. Analyzing the situation and purpose. फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर अपने पर्पस को एनालाइज करते हैं. व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव. Making the best design choices for your presentation depends greatly on your analysis of the situation and the purpose of your slideshow. Will your slides be used during the live presentation? Will they be part of a self-running presentation, such as in a store kiosk? Will they be saved on a server so that users can watch the presentation online at their convenience? Will they be sent as a PowerPoint show or a PDF slide deck to a client instead of a hard copy report? Are you converting your presentation for viewing on smartphone or tablet? ठीक है, यानी आप डिफरेंट ऑप्शन को आप चूज करते हैं. क्या आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट मोबाइल्स पे देखी जा सकती है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो स्मार्टफोन पे देखी जा सकती है, टैबलेट्स पे देखी जा सकती है. ठीक है, यानी आपने तमाम पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है. If you are emailing the presentation or posting it online as a self-contained file or slide deck, it should feature more text than one that you would deliver orally. If, on the other hand, you are creating slides for a live presentation, you will likely rely more on images than on text. ठीक है, यानी अगर आप एक लाइव प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो उसमें ज्यादा सूरत क्या है कि आप प्रेजेंटेशन को, आप लाइव प्रेजेंटेशन को देंगे तो आप इमेजेस को ज्यादा देंगे और इसमें टेक्स्ट कम से कम होगा. एडजस्टिंग स्लाइड डिजाइन टू योर ऑडियंस. उसके बाद आप देखते हैं कि स्लाइड का डिजाइन है वो भी आपकी ऑडियंस की चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर आपकी ऑडियंस इस तरह की है कि आप इस तरह का डिजाइन बनाएं कि ऑडियंस के जो अकॉर्डिंग हो, ठीक है, यानी जो जिसको ऑडियंस अंडरस्टैंड कर सके. थिंक अबाउट हाउ यू कैन डिजाइन योर प्रेजेंटेशन टू गेट द मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ऑडियंस. Audiences respond, for example, to the colors, images, and special effects you use. Primary ideas generally best conveyed with bold colors such as blue, green, and purple.
because the messages that colors convey can vary from culture to culture. Presenters must choose colors and other design elements carefully. Yani you must be so sensitive about the colors of the presentation that the color you are using must suit the audience. अगर ऑडियंस जो है वो लाइट कलर्स को पसंद कर रही है तो आपको कलर्स जो है वो लाइट यूज करने पड़ेंगे. अगर ऑडियंस है वो डार्क कलर को पसंद कर रही है तो यू मस्ट यूज द डार्क कलर. Then the meaning of the color. उसमें in the United States blue is the color of credibility. Underline it for objective purpose. यानी ब्लू कलर किस चीज की क्रेडिबिलिटी को शो करता है, ट्रैंक्विलिटी को, conservatism and trust. Therefore, it is the background color of choice for many business presentations and social media sites. Okay, mostly हम अगर वेबसाइट को विजिट करें तो हम देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट का कलर जो है वो ब्लू ही होता है. Therefore, it is green relates to interaction. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लें. Green color relates to interaction, growth, money, and stability. It can work well as a background or an accent color. Purple can also work as a background or accent color. Okay, background color के लिए purple color is also most suitable color. It conveys spirituality, reality, dreams, and humor. Okay, next आ जाइए. The power of images. Images की जो पावर है वो भी काउंट करती है. Adopt the amount of text on your slide to show to how your audience will use the slides. As a general guideline, most graphic designers encourage the use of the 6x6 rule. 6 bullet per screen. ये आप इसको भी अंडरलाइन कर लें. जनरल गाइडलाइन मोस्ट ग्राफिक डिजाइनर कौन सा साइज रखते हैं इमेज का 6x6 size. 6 bullets per screen. Max 6 words per bullet. Max. You may find, however, that breaking this rule is sometimes necessary, particularly when your users will be doing the presentation on their own with no speaker assistant. For most purposes, those strive to break free from bulleted lists whenever possible and minimize the use of the text. The impact of special effects. इसके बाद हम देखते हैं कि special effects का impact क्या होता है. Just as you anticipate audience members' reactions to color and images, you can anticipate their reactions to special effects using animation and sound effects, flying objects, swirling text, flashing symbols, and the like. Only because they are available is not a good idea. Special effects distract your audience, drawing your attention away from your main points. Okay, यानी आपने अगर आप special effects लगाते हैं, for example, अगर आप if you are preparing the PowerPoint slide and you make the effects. For example, if you are animation, अगर आप animation को कर रहे हैं हम PowerPoint slide, तो it can affect the audience. ठीक है, audience उसको response audience करेगी, किस तरह से करेगी कि जो special effects हैं. Sometimes जो for example you are seeing the slide on the screen. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड है, इस पे अगर एनिमेशन नहीं लगाएगी तो डेफिनेटली इट इज स्टिल. लेकिन अगर इस पे एनिमेशन हम लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि ये ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव वे में ऑडियंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है जी. जी, यू कैन आस्क क्वेश्चन नाउ. जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? Is everything clear to you? ओके, उमर फारूक काइंडली मुझे जो स्क्रीन शॉट है वो अटेंडेंस का स्क्रीन शॉट ले लें, मुझे सेंड कर दें. जी ठीक है मैम, कर रहा हूँ.
चलिए जी our today's lecture is ended. जी any question? जी क्लास एलएमएस पे आप लोगों ने साइन इन कर लिया? समझ आ गई एलएमएस की? Excuse me.